So, yeah. Good afternoon, everyone. So, in the last class, we were discussing about the fourth chapter in class six itself. So, the chapter was regarding geometry, understanding geometrical shapes and sizes, and what are the factors that are involved within geometry. So, within which we have covered most of it, right? We covered like lines, like starting from point, what is a point, then lines we have covered, then like line segment, what is a line segment we have understood. Thereafter, intersecting lines, like the point where two lines meet each other. Okay, then we have also understood parallel lines, the lines which never meet. Okay, all of these we were understanding. Then we have also understood rays. So a very common kind of term that comes in our head when we kind of hear this terminology, ray, is sun rays. So it has a starting point and it never ending kind of a situation. So it has a starting point, but it doesn't end anywhere. It goes towards an endless direction basically. Thereafter, we have also understood curves, in which there are further bifurcation of curves that are like open curve and closed curves. Then we moved forward towards polygons. So polygons, as we understood, are two-dimensional shapes. So polygon, if we kind of bifurcate the term, if we divide the term into two halves, poly, which means more or many, and gons are basically you can say sides, or it's like to be very specific, it would be you can say it would be like it denotes a figure with specified number of angles or sides. Okay, so that is what a gon is. Like we probably have heard about hexagon, pentagon, right? So all of these we were understanding. So in this we will move forward today. So okay, so again, within which we have also understood few other terminologies, like what are sides, vertices. Like vertices are basically the corners of two, when two lines meet each other, they form a corner. Like we have understood, for example, if you see if you are following the screen, if this is a particular line and this is another line, so this point will be the vertex or the vertices. Okay, where the edges meet basically. Okay, okay. And so the plural of then in if we kind of have to go forward and kind of understand the grammatical part of it, then vertex is singular and vertices is plural. Okay, apart from that, we have also got the concepts of diagonals, then angles. So now we will start today for like we will move forward with angles only, right? So today we'll understand what angles are in like we have understood like what is the terminology, what is the meaning of an angle. We got to know about that in the last class, but today we'll understand a little further, which will be beneficial for us to like approach a sum or something. Okay, so so we'll begin with angles today. So angles, as you know, are made up of two rays. Like it has a starting point. Okay, and like ray, as we know, it has an never ending like it has an endless it moves towards an endless direction. So a similar way mein, there will be two rays that will form an angle. So this is about it. Thereafter, so it would have a common initial point. So this initial point, starting point, will be common. For example, this is A. Okay. So the two rays are forming an angle, and these two rays ka jo arms, like these two rays has arms of each like has its following arms. So these will form the angle, like the sides of an angle, or you can call it as the arms of an angle as well. Okay, and this initial point is also certainly a vertex of that particular angle. Okay, singular, one single angle, so single vertex, so it would be also a vertex of that particular angle. So similar way, we have few like kind of types of angles which we'll understand today. Okay, so now, to begin with, acute angle. So this is the spelling of acute, A-C-U-T-E, acute.
and angle, as you know, this is about it. So acute angle is basically an angle whose value lies in between 0 and 90. So before understanding what an angle in between 0 and 90 is, if you remember, if you go back and if you yeah, okay, if you go back in your school days and you start understanding, like, we used to use geometry box, and there we used to have an instrument which was called protractor. This was kind of half circle. So okay, let me, okay, I'll just show you. So this was sort of a protector. So it was an enclosed instrument. And in this, there used to be like markings as well. There used to be markings. It used to start from 0. This side used to go like 10, 20, 30, 40, like 10, 20, 30, 40, like this. And this side, it used to be like 90, 100, if you remember. Like, any one of you, do you remember a protector? Yes. Any one of you, do you remember a protector? I'll just show you. I'm not a pro at drawing, so yeah. Okay, great. Achal remembers. Okay, great. So there used to be marking like this. As far as I remember, there used to be marking like there used to be a upper limit marking and a lower limit marking. Upper limit मतलब ऊपर का एक लिमिट का मार्किंग होता था और एक नीचे का लिमिट का मार्किंग होता था. तो ऊपर का लिमिट का जैसे 100, 110 हो गया आपका. Just give me a second. Okay. So the upper limit marking used to be 100, then 110, then it used to be like 120, and it used to go and go till 180 this side. ठीक है. एंड नीचे का मार्किंग में आपका 0 से स्टार्ट होता था. इट यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम 0, देन like used to be 10, then 20. I'm extremely sorry about the drawing. So it used to go forward till again middle में 60 होता था, फिर 70, and then again you can understand 90. 90 एक ये वाला लाइन होता था जो कि एक straight line. This is a straight line. Okay. So this was 90. एंड सिमिलर वे में इस साइड में भी आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहता था. अपर लिमिट में आपका 90 के इस तरफ आपका 80 रहता था, 70, फिर 60 रहता था, एंड देन इट यूज्ड टू गो टिल अगेन 10. एंड लोअर एकदम नीचे वाला जो पॉइंट रहता था दैट यूज्ड टू बी ऑलवेज 0. ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है दोनों दोनों साइड में. और इसके जो लोअर लिमिट रहता था, लोअर लिमिट में आपका 100, 110, and like this it used to move till आपका 180. आप समझ पा रहे हो, हाफ सर्कल है तो 180 तो इनका एंगल्स का होगा ही. ओके, या गुड आफ्टरनून. ओके, सो so half circle है. जैसे in our like after this class, when we'll be understanding circles in a better way, we'll understand that circle का एक total जो angle रहता है वो 360 रहता है, right? So this is a 360 डिग्री. जैसे बोलते हैं ना कि 360 डिग्री घूम गया, मतलब पूरा एकदम पूरा राउंड ले लिया. ठीक है, तो इसका जो हाफ होता है, अगर हाफ कंसिडर कर रहे हैं तो दैट विल बी ऑफ कोर्स 180, राइट? तो ये जो आप प्रोटेक्टर भी देख पा रहे हो, दिस इज अ प्रोटेक्टर, PROTRACTOR. Okay, this is a protractor. So protractor is again a half circle, so it is a 180 degree एंगल के हिसाब से. ठीक है, तो ये जो प्रोटेक्टर था ये हमको एंगल्स का एक आइडिया देता था. जैसे ये वाला एंगल आप देख पा रहे हो, दिस इज 90, राइट? तो ये 90 है, तो दिस इज अ राइट एंगल. सो स्टार्टिंग विद एन अक्यूट एंगल. अक्यूट एंगल क्या होता था? 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल्स है, तब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 55, 65 सब कुछ इसके अंडर आ जाता है. ठीक है, तो मैं इधर लिख देती हूँ so that if anyone doesn't get confused. Angle between
0 डिग्री, एंड ये जो ऊपर का एक नॉट रहता है वो समटाइम्स लाइक इट इज अ डिग्री सिंबल, ठीक है. इट लाइज इन बिटवीन 0 and 90, ठीक है. ये अक्यूट हो गया आपका. नेक्स्ट आपका राइट एंगल. जैसे राइट एंगल आपको मैं बता रही थी 90. यहाँ पे अगर आप प्रोट्रैक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हो तो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फिगर ओनली. ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन, let me change the color, then you'll be this particular straight line. ये जो straight line है और ये 0 के साथ जो ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ये 90 एक काइंड ऑफ फॉर्म लाइन बना रहा है. सो दिस इज अ राइट एंगल, मतलब एकदम पूरा परफेक्ट है, ठीक है. तो राइट एंगल इज एंगल हुज वैल्यू इज बेसिकली 90 डिग्री, ठीक है. वही सारे एंगल्स होंगे. राइट एंगल इज एन एंगल वैल्यू is 90, ठीक है. After that, middle line of a protector is right. After that, we will move forward with obtuse angle, ठीक है. obtuse angle क्या होता है? obtuse angle थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. obtuse angle is an angle starting from 90 to 180. जैसे आप इधर ऑब्जर्व कर पा रहे हो 90 से 180, इधर की जो लोअर लिमिट होता है तो 100 से 180 तक, मतलब 90 से 180 तक 100, 110, इट कुड बी 105, 125, 120, कुछ भी एंगल्स हो गया, ठीक है. तो ये आपका हो जाता है एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है. ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो गया. और एक होता है ना स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल इज नथिंग बट 180, मतलब जिनका एंगल, जो एंगल का वैल्यू होगा 180, दैट वुड बी अ स्ट्रेट एंगल. दिस इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेट एंगल. मतलब फ्रेश इसमें अगर देखना चाह रहे हो तो ये एक लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है. स्ट्रेट straight angle. So this is an angle whose value is angle value is 180 degree, ठीक है. और एक होता है आपका yeah, it is an obtuse angle, right? Okay, great. So after that आपके ये एंगल्स तो हो गए. फिर आई थिंक इट्स वेरी क्लियर. अक्यूट एंगल जिनके स्टार्ट होता है 0 से 90, like जिनके एंगल के वैल्यू इन बिटवीन 0 and 90, इट कैन बी एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 5, 10 टू एनीथिंग, मतलब कुछ भी एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो भी होगा वो होगा अक्यूट. राइट एंगल परफेक्ट 90 जो होगा, ठीक है, राइट एंगल होगा वो. और राइट एंगल का सिंबल हमेशा ये रहता है, ठीक है. आफ्टर दैट लाइक एक स्क्वायर काइंड ऑफ एक फॉर्मेशन रहता है इधर, ठीक है. आफ्टर दैट ऑब्ट्यूस एंगल आपका 90 से स्टार्ट होता है और 180 तक उसके बीच में, उसके बिटवीन में जो भी एंगल आ जाता है, ठीक है. स्ट्रेट एंगल आपका एंगल वैल्यू जिनका 180 डिग्री होता है, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन और ये जो हाफ सर्कल काइंड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है. आफ्टर दैट आपके थोड़ा थोड़ा और डाइवर्सिफाई अगर करेंगे एंगल्स को तो आपका आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल. एक आ जाता है, एक कॉम्प्लेक्स एंगल आ जाता है. तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, जैसे एक एंगल का हुज वैल्यू लाइज इन बिटवीन 180 to 360 डिग्री. तो ये समझने के लिए हम लोग थोड़ा जब एडवांस में जाएंगे, लाइक जब सर्कल समझेंगे, तब हम लोग आपका रिफ्लेक्स और आपका कॉम्प्लेक्स एंगल भी समझ जाएंगे, ठीक है. कुछ नहीं है, आप अभी भी जान सकते हो. तो रिफ्लेक्स एंगल मैं बता ही देती हूँ, ठीक है. रिफ्लेक्स एंगल वही होते हैं जो कि आपका 180 से स्टार्ट होता है और आपका 360 तक जाता है, लाइक इन बिटवीन, इसके बीच में जो भी है. और कॉम्प्लेक्स एंगल इज एन एंगल हुज वैल्यू इज 360, ठीक है. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एंगल हुज वैल्यू इज 360, ठीक है. पूरा सर्कल ही आप समझ लीजिए. तो दिस इज अबाउट इट. दिस इज द टाइप्स ऑफ एंगल, ओके. और जैसे हम
कल हम last day we were seeing few kind of inner angles, outer angles. So in like interior angles, exterior angles, right? Exterior points basically we were saying. तो वैसे ही कुछ कुछ एंगल्स रहता है जो कि आपके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, लाइक एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं. वी विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे जब हम लोग slowly and gradually will move towards understanding triangles and all. We will understand those things in a better way. So after this, ये आपका एंगल के जो लाइक क्लासिफिकेशन बोलिए या फिर टाइप्स ऑफ एंगल्स. सो टाइप्स हम लोगों ने जान लिया क्या क्या होता है. आफ्टर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंगल का बाइसेक्ट करना. बाइसेक्ट मीन्स इज डिवाइड करना. मतलब ये आपका अगर एंगल है तो इसको, अगर ये ए एक एंगल है तो इसको हम लोग बाइसेक्ट कैसे करेंगे. बाइसेक्ट हम लोग इसके मिडिल से एक अगर लाइन ड्रॉ कर दे रहे, डॉटेड लाइन से ही आप समझ लीजिए. तो ऐसा एक लाइन अगर ड्रॉ कर दे रहे तो ये जो एक एंगल, एक एंटायर एंगल, इट वाज वन एंगल, राइट? प्रीवियसली इट वाज वन एंगल, इट वाज एंगल ए. सो नाउ इट गॉट डिवाइडेड इनटू टू एंगल्स. ये एक बन गया और एक ये बन गया, है ना? तो ये आप बोल सकते हो कि एक एंगल दिस got bifurcated into two angles. So this line acted as a dividing point, like dividing line basically. ये एक partition create कर दिया या bisect कर दिया, right? दो एंगल के बीच में like partition create कर दिया, right? After that, so basically we can say that अगर हम लोगों को और थोड़ा सा अगर हम लोगों को थोड़ा सा डाइवर्स लैंग्वेज में जानना है तो इट वुड बी अ लाइन विच डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स. लाइक दो इक्वल एंगल्स में अगर डिवाइड कर दे रहे हैं एंड दिस टू एंगल वैल्यू विल आल्सो बी द सेम, राइट? इफ फॉर एग्जांपल दिस एंगल ए प्रीवियसली वाज 60, ठीक है? If this angle A previously was 60, so it will get bifurcated into two equal angles. So it's 30-30. Okay. After which, so an angle like ये जो bifurcation होता है ये internally भी हो सकता है और externally भी हो सकता है. Okay. So externally let's see how it happens and internally let's see how it happens. Okay. I hope अभी तक सबको सब कुछ समझ आ रहा है. I hope. So internally we'll see in a new page, okay? Okay. So like this. So internally अगर हम लोग एक figure पकड़ रहे, this is if this is about it, तो internally it's very easy. जैसे आपका एक angle हो गया A है ये O and this is आपका B. Then C is a bisecting line जो कि आपका bisect कर रहा है, bisecting है, ये बाइसेक्ट कर रहा है. ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल में आपका डिवाइड कर दिया इसको. तो ये जो इंटीरियर पोर्शन में हो रहा है, तो दिस एंगल ए ओ सी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी. ये दो एंगल्स, दिस वन एंड दिस वन विल ऑलवेज will be equal to each other. Okay. And so as we can understand, this is a situation where it gets internally bifurcated, like internally bisect हो रहा है, internally divide हो जा रहा है. अभी किसी का कोई question था क्या? Okay, everyone is okay. Thank you Tanu for translating it into Hindi. Everyone, you can follow the chat box as well, so that if you're having any problem in understanding like आपके हिंदी like हिंदी के translations के साथ you can understand it as Tanu is kind of translating it in the chat box as well. So now जो external angles रहते हैं, so how we can do it. So if again this was about it, right? This is AOB पहले का जो एंगल था, तो सिमिलर वे में C ही हम लोग पकड़ते हैं and C is going from outside of this particular angle. This was the previous one, okay? So now C is this one. So this is getting bifurcated again into two parts. This one and this one.
ओके, तो ये बाहर से इसको हम लोग एक्सटर्नली, दिस इज एन एक्सटर्नल एग्जाम्पल एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल, लाइक इंटरनल बाइसेक्शन. ठीक है, अभी ये जो हुआ, ये आपका जो ओ सी, ये जो ओ सी है, दिस ओ सी इज एन एक्सटर्नल एंगल, like is the external angle bisector of AOB. ठीक है, of angle AO and B. ठीक है, so this one, I think it's very easy and it's quite clear to everyone. So now we will move forward and we'll understand few other things like triangles and quadrilaterals. So triangles, I think everyone is does anyone have any like kind of problem up until now? Does anyone have any question or problem? Okay, no. Okay, great. Okay, thank you so much. Okay, so next we'll move forward with triangles. So as you can understand, triangles are three-sided polygon, and polygon, as I have explained it previously as well, like polygon में polygon अगर दो ये word को हम लोग divide कर दे रहे, poly is basically आपका more or many, or gon is sides, right? And if we understand, if we have to kind of, when we'll understand further kind of classifications and further figurines of polygons, we'll see that triangle is actually the least kind of has the least number of sides in a polygon. So इससे कम कभी भी होगा नहीं, क्योंकि as previously also in polygons kind of like definition, we have seen that polygon is something that is created with like lines. ठीक है, तो लाइन से हम लोग लाइन को जोड़ जोड़ के हम लोग एक फिगर बनाते हैं, straight lines को जोड़ जोड़ के हम लोग एक फिगर बनाते हैं, and that figure turns into an polygon. And the number of lines that we kind of combine together, and the figure that it forms, the polygon that it forms, it translates into a figure, and that figure has that figure can have as many as sides it wants to, and according to which we generally like kind of name that particular figure. तो वैसे ही करके अगर ट्रायंगल भी आप देख देख आपको पता ही होगा ट्रायंगल क्या होता है. तो ट्रायंगल इज आल्सो फॉर्म्ड बाय थ्री लाइन्स और थ्री लाइन सेगमेंट्स आप भी बोल सकते हो. तो ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड विद थ्री लाइन्स. सो इससे छोटा अगर आप लोग लाइक इससे छोटा साइड्स के अगर पॉलीगॉन आप बनाना चाहते हो, दैट वोंट रियली हैपन, बिकॉज उसमें आपको दो लाइन्स यूज करना पड़ेगा. एनी हाउ अगर आप ऐसे भी यूज कर रहे हो तो इट इज नॉट बिकमिंग एन एनक्लोज्ड फिगर. एक क्लोज आपको फिगर नहीं मिल रहा है, राइट? एक क्लोज फिगर नहीं मिल रहा है आपको, ये ओपन फिगर रह जाएगा. आप एक दो लाइन को जोड़ के यू कैन नॉट मेक अ पॉलीगॉन एज सच. ओके, सो सिमिलर, तो इसी वजह से ट्रायंगल एक ऐसा फिगर है जो लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स रहता है पॉलीगॉन्स में, ठीक है, विच इज थ्री साइड्स. Now we'll see like triangles in a better way. So abhi tak we understood this. So if you remember, or like all of us remember, right, what a triangle looks like. So if this is a triangle, इनका naming कर देते हैं हम लोग A, B और C. ठीक है, तो आप अगर देख आप अगर साइड्स लाइक साइड्स हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि साइड्स क्या होता है. This one, this is the definition of a side, which is an upright and a sloping surface of a structure or an object, ठीक है, that is not टॉप और बॉटम और जनरली द फ्रंट और बैक. ठीक है, एक नॉर्मल एक स्ट्रक्चर का स्लोपिंग और अपराइट एक सरफेस जो कि उनका साइड होता है. ठीक है, उसका फ्रंट और बैक एज सच नहीं है, आप लोग फ्रंट और बैक को फ्रंट और बैक ही बोलिए. साइड्स आर बेसिकली द स्लोपिंग और द अपराइट स्ट्रक्चर्स in that particular figure. ठीक है, अभी
ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की आप देख सकते हो कि ए बी ये वाला पार्ट, बी सी ये वाला पार्ट, और लाइक सॉरी ये वाला पार्ट बी सी, और सी ए ये वाला पार्ट, ये आपका ट्रायंगल का साइड हो गया, राइट। एंड इसके जो एंगल्स है दैट इज दिस वन ए बी एंड सी। सो एंगल ए बी सी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए को आप लिख सक यू कैन राइट इट एज बी ए सी which is angle A, or angle C. If we are moving like clockwise, we can write it like ACB. So which is angle C, and this is like B, angle B को आप लिख सकते हो CAB, which is angle sorry CBA, CBA, which is angle B. Similar way में आप इधर इधर भी similar ही है, CBA and all of these things, okay. Or ABC also you can write it, since we were moving from this side, so इसको हम लोग ऐसे लिखे, ठीक है. So angle ABC we got to understand, and similar way में ये जो edges थे, ये edges मिलके आपके vertices भी बनते हैं. So this A, B and C point, these are also vertices of an angle. So this A is a particular vertex of this particular these two lines, and B is a vertex of these two lines, right? And then C is also a vertex of these two lines. So all of these combined together, these are forming the vertices of a triangle, along with which it is also giving the angles of this particular triangle. ठीक है? अभी triangle के हम लोग classifications में जाते हैं. I hope it's clear. Like sides, अभी तक हम लोगों ने triangles के बस sides, angles और vertices के बारे में discuss करा, ठीक है? Now we'll move forward with let's see. Now we'll move forward with classifications of triangles. So triangles. So this is a triangle, right? So it can be any, like this is a triangle, but triangle can be of any form. Like उनके angle के हिसाब से आप कुछ भी हो सकता है उनका shape, ठीक है? बस ये याद रखना पड़ता है कि triangle का 3 side होगा और 3 angles रहते हैं. So that is about it. So अगर आप triangle को देख रहे हो, एक triangle, right? Triangle की classification में we can divide it on a basis of sides and angles, ठीक है? Side और angle के basis में हम लोग उसको classify कर सकते हैं, side और sides, ठीक है? S लिख दिया क्योंकि 3 है, और angles. अभी sides के basis में आप कर सकते हो कि side के basis में आपका 3 classification आ जाता है. एक होता है आपका equilateral, एक होता है scalene, और एक होता है isosceles. So I will explain. Don't get afraid by the terminologies. अगर किसी को हिंदी terminology पता है like in terms के, please write it down so that it can be helpful for all of us. Isosceles. I think the spellings are correct. ISOSCELES. Yeah, right. Abhi scalene is SCALENE. Scalene. Yeah, right. So this is about is equilateral isosceles scalene. So equilateral में आपको term से ही पता लग रहा है कि equal, equi. Okay. It talks about Achal, you wrote no, ma'am. Okay, you have written it previously on some other question. Okay, no problem. So equilateral, we'll understand this before that we'll understand this angle का जो like classifications हो सकता है. So angles की classification में definitely जैसे हम लोगों ने angles जब पढ़ा तो we have seen that angles का क्या क्या division रहता है. Acute, like आपका obtuse और right angle, right? तो similar way में right, like triangle के भी वही होंगे. So it would be acute triangle, acute angled triangle. Next आपका obtuse,
और आपका और इज राइट एंगल, राइट? दिस इज right angle. So okay, so this is about it. So now we'll understand this in a better way कि अभी इक्विलैटरल क्या रहता है, आइसोसेलेस और स्केलिन क्या रहता है, क्योंकि ये सारे तो टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने अभी देखा कि अक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है और राइट क्या होता है. तो ये समझने में हम लोगों को बहुत इजी रहेगा. इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड acute, obtuse and right angle because we have already seen what these terminologies and what these angles actually are. So we it would be very easier for us to understand it in terms of triangles as well. But in terms of sides, we'll understand specifically ये sides के मतलब क्या रहते हैं. So equilateral is basically equal sides. ठीक है. Scalene is आपका is a triangle in which all sides of this particular angle is unequal. Okay. Or isosceles is a triangle in which two sides are equal and two angles opposite to that side are equal. Okay. Yeah, right. Thank you so much, Achal and Tanu. So this one, all sides equal. Sub sides के साइज लाइक सब साइड्स के जो लेंथ होते हैं दैट इज इक्वल. आइसोसेलेस में आपका आइसोसेलेस में दो साइड्स एंड टू ऑपोजिट एंगल्स, टू एंगल्स, ओके, opposite to that equal that two equal sides ये इक्वल होंगे. ठीक है. मतलब दो एंगल जो कि ये दो एंगल के ऑपोजिट में है वो, और आपके ये दो मतलब दो साइड्स इक्वल होंगे और दो एंगल जो कि वो दो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट में होंगे वो इक्वल रहेंगे. और स्केलिन में नो साइड्स आर इक्वल. नो साइड्स और एंगल्स कुछ भी इसका इक्वल नहीं रहता है, सब अलग अलग. ठीक है. सबका साइज वगैरह सब अलग. तो दैट इज अबाउट इट. तो इक्विलैटरल में if you take one side as 2 centimeter, so this will also be 2, this will also be 2. और एक प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल होता है कि आपका फिर इनर जो भी लाइक इसका जो आपका जो एंगल्स रहते हैं दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ 60-60-60. ठीक है. एंड आइसोसेलेस में एज यू कुड as from this particular like kind of as from this particular explanation you can understand that two sides are equal. For example, if this two sides are 2 2 and this is for example this is 3, then इनके जो opposite में है for example this इनके opposite में this angle and इसके opposite में this angle. So these two angles, for example this is ABC, and so this angle A and angle C will be equal. Angle A and angle C will be equal. So this is opposite to this, like BC के opposite में आपका A है, BC के opposite में आपका A है और AB के opposite में you have C, right? You have C. So since AB and BC is equal, so this angle A and angle C will also be equal. Isosceles triangle का ये property है. बाकी स्केलिन का कोई property, like स्केलिन का property है वही कि आपका कोई sides equal नहीं रहता है. So basically if this is a triangle, so it can have any like kind of इनके जो length रहते हैं वो कुछ भी हो सकता है. 5 2 ये तो 2 नहीं लग रहा है पर फिर भी मतलब ये 4 पकड़ लीजिए और इसको आप 3 पकड़ लीजिए. ठीक है. This is the properties.
So apart from that, अभी acute angle triangle and obtuse angle triangle, जैसे हम लोगों ने equilateral triangle में मैंने बताया कि इसके जो inner angles रहते हैं, those are like 60 60 60, right? So 60 मतलब क्या होता है, ये acute angle में आ गया, क्योंकि 0 से 90 के बीच में जो भी angles रहते हैं, ठीक है. Obtuse में similar way में आपका like bigger angles, like जो कि 90 से लेके आपका 180 तक, जो भी जितने भी angles है. और राइट एंगल में आपका 90. तो राइट एंगल ट्राइंगल आपका ऐसा दिखता है, ठीक है. एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, you can draw it something like this. तो ये आपका डेफिनेटली, ये अगर 90 हो रहा था, ये ओके, I'll draw it in a separate page. Just give me a second. Okay, I'll draw it in a separate page. So this one, obtuse angle में आपका, example, obtuse angle looks like this, okay? If I'm considering this this as a triangle, okay, let's change the name as P Q R, and this is an obtuse angle because ये जो एंगल है, ये आपको समझ आ रहा है. इफ दिस वाज राइट एंगल, लाइक जो इनका स्ट्रेट था, राइट, दिस वाज अ 90 डिग्री and this was a right angled triangle. So this one will definitely be something more than, this angle will definitely be angle which will be more than 90, right? ये अगर आप straight line पकड़ते तो ये 90 रहता, तो ये जो आपका जो ये line जो angle बना रहा है, ये like PQ and like QR जो angle बना रहा है, that would definitely be something more than 90. It could be 110, it could be 105 or 120, anything. तो ये एंगल डेफिनेटली बड़ा है 90 से, तो 90 और 100 के बीच में जो भी रहता है, 100 नहीं, सॉरी, 180 के बीच में, that is an obtuse. Okay, apart from that, right angle we have understood, and of course this acute angle is okay. This normal triangle एक पकड़ लेते हैं, तो इनके जो अंदर का जो 90 से कम है, डेफिनेटली. if you remember again the protractor, so protractor was this, right? This was 90. तो इनके अंदर जो भी like inner circle में जितने भी angles थे, so ये this was inner circle में आपके 80 70 60 65, it could be anything, ठीक है. ये आपका acute बन जाता है. So this is about it. This is like this is like basic classifications jitne bhi the I have told you. If anyone has any question up until now, you can ask me. If not, we can move forward. I hope not. Clear, ma'am. Okay, great. So right now we can see a sum, if you want to, if you want me to explain आपका quadrilateral, that also I can do, or we can let's do a sum. It would be better. So for example, we have this figure. We have this figure as R, Q, and S. Okay, and we have a line QT, which is bifurcating this angle Q. Okay, and we have another line which is bifurcating this angle S, which is ST, because this is T, of course, and this is the vertex of this particular point, ye wala.
then it is also, you can understand from this particular figure as well कि ये एक triangle भी बना रहा है खुद, ठीक है? और and this is an angle y and this is an angle x. So the sum is, so in this particular figure, QRS, you can understand QRS, ये जो बड़ा figure है, and is a equilateral triangle. Okay, this QRS आपका equilateral triangle है. Equilateral triangle है, ठीक है? And TQ है, ये जो छोटा वाला triangle है TQS, this is an isosceles triangle. I hope everyone remembers what an isosceles triangle is. दो sides equal रहते हैं और दो sides के opposite जो angles रहते हैं, that is equal. Isosceles triangle, ठीक है? And the sum is, this x is x का जो value है, that is given as 47, जो कि acute angle है, आपको समझ आ रहा होगा, acute है. And we have to find y. ये y का क्या होगा? That is what we have to find. I'll give few minutes for some people who would like to try it. कोई try कर रहे हैं? आप yes or no में आप answer दे सकते हो if you any one of you are trying. Okay, no one is replying, so I'll start with the solution. So पहले हम लोग छोटा छोटा ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये जो ट्रायंगल है ना TQS, ये ट्रायंगल आपको बताया गया था ये आइसोसेलेस है. तो अगर ये आइसोसेलेस है तो आप ये भी समझ पा रही हो कि ये जो लाइन था QT और ST, ये दोनों, ये जो बड़े एंगल्स थे Q और S, राइट? दिस एंगल्स, ओके, क्लियर मैम? या, सो ये जो बड़े एंगल्स थे इन दोनों को बाइफिकेट कर रहा है. सो वी कैन राइट दिस एज दिस TQS is actually equal to आपका TSQ, and which is, क्योंकि ये आइसोसेलेस है, which is equal to this, ये this one x 47 degree. ये तो बताया, ये तो already given था, right? So this one and this one was equal because this one, as you can understand, right? And ये equilateral triangle भी था, ये जो QRS जो था, बड़े वाले जो figure, बड़े वाले जो triangle था. Okay, so now we can consider this QRS. If we consider QRS, so since it was an equilateral triangle, so in that case आपका जो, just follow the marking, okay? This angle RQS, this angle, okay, this huge angle, not Y, ये वाला, ठीक है? ये RQS जो है, ये is equal to 60, है ना? अभी फिर आपका this RQT plus TQS, that is equals to 60. RQT and TQS, this one and this one. So this is bisecting, right? So now this also, this RQT is actually Y.
है ना। एंड ये जो आपका टी क्यू एस है, ये आपका तो 47 है, क्योंकि ये टी क्यू एस, ये तो 47 था। ये छोटा वाला एंगल जब आइसोसेलेस के प्रॉपर्टीज से हम लोग समझ गए थे ये, राइट। So now this is 60. So y will be of course 60 minus 47. This will be 53 and 5, 1, 13. हाँ, ठीक है। This would be 13. So this is how it goes. मतलब properties को लेके we can find out whatever angles or whatever like जो भी दिया गया है. If you consider this particular और थोड़ा थोड़ा पुराने वाले concepts भी हम लोग देख लेते हैं अभी, कि ये जो angle था ना, ये जो TQS था, ये जो triangle था, इसका जो interior angle में आपका x आ जाता है, interior मतलब inside, और exterior angle में आपका y आ जाता है. तो ट्रायंगल्स की और एक प्रॉपर्टी भी है विच वी विल अंडरस्टैंड लाइक जब हम लोग अलग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब समझेंगे, बट यू कैन नो दिस लाइक जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ये भी एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स के. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो कि आपके न्यूमेरिकल करने में बहुत ईजी लाइक बहुत हेल्प कर देता है. ओके Yes, right. Great. So next we'll move forward with quadrilateral. ठीक है. Quadrilateral आपका ट्रायंगल के बाद ट्रायंगल तीन साइड को लेके मतलब बन जाता है. ठीक है. तीन साइड और तीन एंगल्स को लेके सिमिलर वे में क्वाड्रिलेटरल क्वाड लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम लोगों ने देखा है कि क्वाड लाइक 4 पार्टनर्स एंड लाइक 4 साइड्स. सो 4 साइड्स पॉलीगन्स के रहते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल हो गया. और इसका 4 साइड्स रहता है ऑफ कोर्स, एंड देन 4 एंगल्स भी रहेंगे. ठीक है. 4 साइड्स रहेंगे और वो एनक्लोज्ड रहेंगे तो 4 एंगल्स तो बनाना ही पड़ेगा इनको. ठीक है. So that is about it. The quadrilateral, we'll see few things. Okay. So now like we have already understood, so now we'll see a figure of quadrilateral. If you can consider this as a quadrilateral, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 4 साइड्स रहते हैं ABCD. AB एक साइड है, BC एक साइड है, CD है और DA भी है. ठीक है. ये आपका साइड्स हो गए. और एंगल्स में ABCD आपके साइड्स भी है. और सिमिलर वे में इसमें और एक प्रॉपर्टी आ जाता है, जैसे कि आपका AB है, ये एडजेसेंट है BC से, BC के साथ ये एडजेसेंट है. सिमिलर वे में आपका जो AB है और DC है, AB और DC ये दोनों ऑपोजिट साइड्स में भी है. अगर ये लाइक ये वाला और ये वाला नहीं रहता तो ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर भी हो जाते हैं, राइट. अगर ये दो साइड्स मतलब अगर ज्वाइनिंग, आप ये भूल जाइए कि ये कोई एक साइड है. तो पहले जब हम लोग पैरेलल लाइंस पढ़ रहे थे, व्हेन वी वर लर्निंग, व्हेन वी वर अंडरस्टैंडिंग पैरेलल लाइंस, सो एट दैट पॉइंट वी सॉ दैट द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइक जो एक दूसरे के साथ कभी मिलते नहीं है, लाइक थर्ड एजेंट, तो ये आपका थर्ड एजेंट हो गया. ये जो लाइंस थे एक्सटीरियर लाइंस, तो दोज आर लाइक थर्ड एजेंट व्हिच आर kind of pushing them to meet with each other. But then in general these two, BC and like AB and CD, DC or CD, these two are parallel to each other as well, right. So these are also opposite to each other, like opposite sides bhi hai. Okay. Apart from that, okay, now let's clear it out. Okay. So this A B C D, इसमें आपका ए बी और ये एडजेसेंट हो गया. और आपका एंगल्स में ऑपोजिट, दिस एंगल इज ऑपोजिट टू दिस, और एक ऑपोजिट एंगल आपका ये हो गया, बी इज ऑपोजिट टू डी. सिमिलर वे में आपका अगर आप अगर देख रहे हो कि दिस बी एंड डी इज ऑल्सो ऑपोजिट, एंड सिमिलर वे में आपका एडजेसेंट मतलब जो पास में है, जो कि हम लोग लास्ट क्लास ही हम लोग पढ़ रहे थे, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स और एडजेसेंट साइड्स आर समथिंग, दोज आर लाइक नेबर्स और लाइक पास पास है, मतलब
एक दूसरे के, ठीक है. So similar way में this one, A and B, these are adjacent to each other. A and D is adjacent to each other. D and C is adjacent to each other. Similar way में B and C is adjacent to each other. So about this is about the angles, adjacent angles and opposite sides. तो हम लोगों ने समझ लिया. So any questions up like till now regarding this? I think no. Okay, clear. Okay, thank you so much. So so क्या होता है ना कि today's class is a level up to the last class that we did, and the next class again will be another level up to what, to the class that we are doing today. Okay, so basically जो हम लोग triangles पढ़े, triangles की जो basic concepts पढ़े, you go through those concepts. Okay, so इसके जो level up रहते हैं ना, I'm just kind of giving you a little hint about it. So triangles के congruency के बारे में, similarities के बारे में, the properties of it, we'll understand that. Then we'll understand the altitudes of triangles. So those will be like kind of, those will be very like like hello, am I audible? Okay, great. Yeah, I think I am audible. So yeah, apart from that, we will, yeah, okay, thank you. Okay, so next, we will also understand in the next class about median, and which is also related somewhere to triangles only. So that would be again a level up of this particular class. There will be perpendicular bisectors in a triangle. Yeah, so perpendicular bisectors, will understand that as well. Okay, so next, quadrilaterals. There are some important properties of quadrilaterals, like we were right now I was talking about these two lines which could be parallel, which is parallel to each other, kind of these two opposite lines. So ऐसे ही we will understand a figure which is known as parallelogram. Okay, how it goes, how, why is it parallelogram. Okay, so today's class I will and there are other figurines like rhombus is there. Rhombus is a sort of नहीं, आप बोल ही सकते हो कि that is actually a kite kind of a situation. Like एक kite ही है, आप बता बोल सकते हो वैसे. तो ट्रायंगल, ट्रायंगल तो पढ़ लिया हम लोगों ने, और रेक्टेंगल्स के प्रॉपर्टीज. देन स्क्वायर, ट्रेपेजियम. Trapezium is again very important. So all of these, and then we will I think then I should move forward with like kind of circles, because I think that would be um, today I end the class up right now. Okay, and I had few like circles and all, but I feel पहले हम लोग triangles और quadrilateral के advanced concepts भी कर लेते हैं, then we will move forward with circle, because circle का basic concept सबको पता है circle क्या होता है and how it goes. And जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा बता ही दिया कि angle का उनका पूरा complete 360 degree रहता है. So all of these things are there. Okay, so next class will move forward with a particular size, like particular figures क्या क्या रहता है और उनके जो properties रहते हैं. We'll move forward with that. I hope that would be helpful. Any questions, any queries, or if anyone wants to kind of add anything, you can mention that as well. Um, okay. I was saying that if anyone has any question or any query, I think today's class was easy, quite easy for everyone to understand. Okay, great.